SBA Publications. Hello my dear students, how are you all? I hope you all are happy and healthy in your home. And I hope you all are doing very well in your studies. This is your mentor Soni Sati and today with me we are starting our chapter number 8 and the name of our chapter is More on Scratch. In our previous classes, class 4, class 3, we have learned about Scratch. So here we are going to learn more about Scratch. So let's learn more amazing concept of Scratch with me in this video. Without any delay, let's learn what we are going to learn in this chapter. Learn about advanced screen elements of Scratch. अब हम कुछ advanced elements भी पढ़ेंगे Scratch के अंदर. Add new sprite using the new sprite button. और new sprite को add करना सीखेंगे. Understand the feature of look block and sound block. अब हम look block and sound block को भी समझेंगे. Here we are provided with 3 questions in warm-up exercise which you people have to do by yourself with the help of our previous concepts. Now we have our conceptual part of this chapter. A sequence of instruction given to a computer is called a program. जो भी हम सारे के सारे instructions कंप्यूटर में देते हैं उसे हम कहते हैं program. The language used to write these instructions is called a programming language. और इन प्रोग्राम को लिखने वाली लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. Let us learn more about the new programming language called Scratch. So, Scratch एक तरीके से एक लैंग्वेज है, ओके? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि हम यहाँ पर लिखते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड अपना एक्शन पूरा करवाते हैं. So, a Scratch is a free multimedia programming language used to create interactive stories, games, animations, music, and art by simple dragging and dropping of instruction. So, Scratch की एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक मल्टीमीडिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम गेम्स, एनिमेशंस, म्यूजिक और आर्ट इंटरैक्टिव स्टोरीज बना सकते हैं with the help of just doing 2 things, dragging and dropping of instructions like a game. So it's totally like a game. It is a programming tool that can be used by students, teachers, scholars and parents for science and math projects, presentations, simulation, experiment, etc. So basically इसको हम कोई भी यूज कर सकता है लाइक टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, पेरेंट्स. और ये यूज क्यों होता है? साइंस एंड मैथ्स प्रोजेक्ट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, सिमुलेशन के लिए एंड एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा के लिए. नाउ वी हैव द स्क्रीन शोन बिलो इज अ स्क्रैच विंडो. सो हियर वी हैव द स्क्रैच विंडो स्क्रीन. लेट्स लर्न अबाउट इट. हियर एज वी कैन सी वी हैव मेन्यू बार which is containing 4 tabs. And then title bar which will show us title, maximize, minimize and close button, and the presentation mode. This red dot shows presentation mode. Okay, this is a green flag. It denotes the starting point. Now view mode, by this we can view our action. Now this is stage where the sprite will work. स्प्राइट लिस्ट, यहाँ पे आपके पास स्प्राइट की लिस्ट होगी कि आपके पास कितने टोटल स्प्राइट्स हैं. नाउ हियर वी हैव ब्लॉक्स पैलेट एंड these are the tabs and this is all about the scratch window. Now we know that this is the script area where the script will done. Now we have the new sprite buttons. So हमने जो पिछली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में सीखा था उनके अलावा हम अब कुछ स्प्राइट बटन्स के बारे में समझते हैं. Every time you start Scratch, it begins with a cat sprite. जब हम स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक कैट स्प्राइट के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोग्राम चलता है. The following buttons are used to add a new sprite. स्प्राइट ऐड करने के लिए हमें इन स्टेप के लिए जाना पड़ेगा. वेरी फर्स्ट स्टेप इज go to the this kind of button
to paint a new sprite in the paint editor. So पेंट एडिटर में जाकर हम इस बटन पे क्लिक करके अपना एक न्यू स्प्राइट पेंट कर सकते हैं. स्टेप 2, क्लिक ऑन दिस बटन टू सेलेक्ट अ न्यू स्प्राइट फ्रॉम द फाइल. अगर फाइल से चाहिए आपको स्प्राइट, सो यू विल गो टू दिस बटन. एंड अगर आपको सरप्राइज स्प्राइट चाहिए फ्रॉम द स्क्रैच, सो यू हैव टू गो टू दिस बटन. Okay, these are 3 buttons to add sprite. Okay, now we have sprite list. So basically it displays thumbnails for all the sprites in a project. Thumbnails क्या होता है? एक छोटा सा विजन. ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा विजन होता है सारे के सारे स्प्राइट्स का एक प्रोजेक्ट के लिए. The name of each sprite appears below its thumbnail. और हर एक स्प्राइट का नेम उसके थंबनेल के नीचे दिया होगा. Tabs. There are 3 tabs available on the Scratch window: Script tab, Costumes tab, and one more. Okay, so Script tab, by default, Script tab is active. When you start a new project, the Script tab is automatically selected, displaying the script area. So basically, Script tab जो होता है वो by default already open होता है. Okay, and जब भी आप कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, जो स्क्रिप्ट टैब होगा वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, ऑटो सेलेक्ट होगा, एंड देन वो स्क्रिप्ट एरिया डिस्प्ले करेगा. नाउ कॉस्ट्यूम्स टैब. हियर दिस टैब इज यूज्ड टू सी एंड एडिट द स्प्राइट कॉस्ट्यूम. तो यहाँ पे हम स्प्राइट के कॉस्ट्यूम को चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं. बाय डिफॉल्ट वी नो दैट वी हैव cat sprite. So the cat sprite has 2 costumes. To switch between them, simply click on the thumbnail of the costume you want. So what are the steps for that? Step number 1 is click edit button to edit the selected costume in the paint editor. And step 2 is click copy button to create the copy of the selected costume. Now there are 3 ways to create a new costume. अगर आपको new costume बनाना है तो आपके पास 3 ways हैं. First way is go to the paint button and new costume using paint editor. So you can make there a new costume by using the paint editor. Okay, now step 2 is click import button to select a costume from the file. अगर आपको कहीं और से फाइल से अगर आपको import करना है, so you have to go to the import button and click camera button to take photos from the web camera. And camera button पे जाएंगे ताकि आप फोटो ले सके as per your requirement. Now we have sound tab. This tab is used to see and listen to sprite tab. So ये क्यों use होता है? Sprite की sound को listen करने के लिए. Okay. Step number 1 is click play button to play the sound and click stop button to stop the sound completely. Now there are 2 ways to add a new sound. अगर आपको कोई new sound चाहिए अपने sprite में, अपने काम में, so you have to do these ways. First is click record button to record new sound using the sound recorder. So sound recorder के help से आप एक sound record कर लेंगे and then उसे आप add कर लेंगे. And step 4 says click import button to select a sound from the file. So import button से आप फाइल से एक sound extract कर सकते हैं, import कर सकते हैं. Now we have the blocks palette. Here you have learnt about motion block and pen block in your previous class. Now let us learn about look block and sound block. So हमने बहुत सारे blocks के बारे में अपनी previous classes में already पढ़ा है. Now we are talking about looks block and the sound blocks. So looks block has instruction to change the appearance of the sprite. So basically यहाँ पे already written है look block. That means it is saying about look, appearance. So if we have to change the appearance of the sprite, we will go to the look block only. Here we have so many options of look block. So switch to costume, costume 2, costume 1. So this kind of block will tell us that it changes the sprite costume by selecting different costume from the drop down list. You can use costume tab to add new costume in the drop down list. So आप costume tab drop down list में जाकर कुछ नए costumes को भी add कर सकते हो. And basically ये सिर्फ use होता है ताकि आप costume change कर सके. Then we have next costume.
it changes the sprite costume to the next one in the costume tab. So basically costume tab में जो भी हमारे पास costumes होंगे ये एक आगे वाला next one वाले में change कर देता है. Say hello for 2 seconds. So it displays sprite speech cloud for the specified amount of time. So यहाँ पे अगर हम जो बोलेंगे जो लिखेंगे and then हम time लिखेंगे so उसी time के according वो text पढ़ा जाएगा, रीड किया जाएगा. And you can change the text by clicking in the text area and type the new text. Okay, and you can change your second also by clicking it. Now say hello. So it displays sprite speech cloud. So basically अगर आपके पास कभी भी say वाला आएगा option, say वाला block आएगा, you will see that it is just for read. Okay, it is just for speech. Now think for 2 seconds. So it displays sprite thinking cloud for the specified amount of time. So ये क्या show करता है कि sprite को think करना है. Okay, change the text by clicking in the text area and type the new text. और यहाँ पे आप इसके अलावा कोई और text भी डाल सकते हैं. For example, wait a second, I'm on the way. Okay, then we have think. It displays sprite thinking cloud. ये हमें क्या दिखाता है कि sprite thinking cloud हो रहा है. Okay, sprite thinking हो रही है. Now we have sound block. So basically sound block has instructions that are used to control sprite sound, as it is saying with the title that we are going to talk about sound only. So sound block क्या होते हैं? इनमें ऐसे instructions होते हैं जो हमें sprite की sound को control करने में help करते हैं. Sound block. Play sound meow. So here it plays the selected sound from the drop down list. So आप drop down list से जो भी select करेंगे वो sound चलेगी. You can use sound tab to add new sound in the drop down list. इससे क्या कर सकते हैं हम? Sound tab की help से हम new sound भी add कर सकते हैं in our drop down list. So हमें पहले sound tab पे जाना पड़ेगा. And then we have to make a drop down list. Now stop all sound says that it stop playing all sounds. So stop all means अब आपकी जितनी भी sounds होंगी वो सारी stop हो जाएगी. Then we have play drum. Here we have a number. So 71, 72, 73, short whistle, long whistle, short gyro. So it plays a drum sound. So basically ये एक drum sound play करता है for a specified number of beats. तो यहाँ पे हम जितनी बार number लिखेंगे, जो number लिखेंगे उतनी बार ही drum beat की sound आएगी. You can select more sounds from the drop down list. और हम drop down list से more sounds को भी इसमें add कर सकते हैं, customize कर सकते हैं. Now we have the key points of this chapter. So a sequence of instruction given to a computer is called nothing but a program. So जब भी हम set of instruction देते हैं, sequence of instruction देते हैं to a computer, that is known as program. And the language used to write the instruction is called a programming language. And we know that a Scratch is a free multimedia programming language used to create interactive stories, games, animation, music, art by simple dragging and dropping of instruction. Simple dragging and dropping of instruction से हम बहुत सारी चीजें Scratch में कर सकते हैं. Now every time you start Scratch, it begins with a cat sprite. So by default we know that जब भी हम Scratch start करेंगे, जो पहला sprite होगा वो cat sprite होगा. The sprite list displays the thumbnail for all the sprites in a project. There are 3 tabs available on the Scratch window. Now costume tab is used to see and edit the sprite costume, and the sound tab is used to see and listen to sprite sound. So that was all about our chapter. Here we have the let's do it exercise, the back exercise of this chapter that you people have to do with the help of all the concepts that I explained above. Now by here we have completed our chapter. Now we're gonna meet in our next video with another amazing chapter. I hope each and every concept of this chapter is totally clear to you. If you found any query in any concept, please go once again to this video so that your concept is totally clear. Now we will meet in the next video. Till then, keep on learning. Take care. Bye bye.